everyone, I am C.H. Khandelwal and I welcome you to my YouTube channel. तो गाइस मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेके इस टॉपिक पे जिसका नाम है हाउ टू स्टडी CA फाइनल SCMP। इस टॉपिक पे बहुत से बच्चों को बहुत डाउट्स हैं पहले भी, इसके लिए हमने पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। बट नवंबर अटैम्प्ट में स्पेशली बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं एंड उसका क्या रीज़न था, क्यों हुए हैं, वो हम जानेंगे आज नवंबर अटैम्प्ट की रैंकर के साथ, जिनका AIR 37 आया है एंड कॉस्टिंग में एग्जामेशन है। कॉस्टिंग नहीं, SCMP। तो SCMP में उनका एग्जामेशन आया है, ठीक है। तो उनके साथ जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे साथ आज है CA पूर्वा बत्रा। इन्हें नवंबर में एग्जाम्स दिया। नवंबर जब पैंडमिक के बीच में एग्जाम चल रहे थे तब इन्हें एग्ज़ाम दिया एंड उसमें इनका रैंक है AIR 37। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू पूर्वा। एंड उसमें भी कॉस्टिंग SCMP, जिसमें बच्चों के बहुत सारे बच्चे ग्रुप उनका फेल हुआ है उस सब्जेक्ट के कारण, कॉस्टिंग कारण। बहुत लोग का सब्जेक्ट मतलब एग्जामिशन ग्रुप रह गया है, मतलब 200 तो आ गए बहुत सारे लोगों के, बट कॉस्टिंग में मार्क्स नहीं आए। बट पूर्वा ने उसमें भी एग्जामिशन लाया है, तो मैंने सोचा कि इनके साथ वीडियो बनाया जाए। तो पूर्वा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ किया, क्योंकि बहुत से बच्चों को बहुत डाउट्स होते हैं कि स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ करें। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ किया। So to start with, I had taken my classes back in 2018, बट वो क्लासेस कोई काम में नहीं आई क्योंकि हमारा कोर्स पूरा चेंज हो चुका था। क्लासेस में हर जगह माई क्लासेस ऑल्सो दे टॉट ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड जो एनालिटिकल क्वेश्चंस एक्चुअली अभी एग्जाम्स में आ रहे हैं उसका रेफरेंस कहीं यूज़ ही नहीं किया था। सो आई स्टक टू study material including the case study book, which is very important. People tend to ignore क्योंकि वो थर्ड बुक है तो वो छोटी सी बुक है, हो जाएगी, कर लेंगे। And including that, case studies which are there on the website, you need to be updated कि institute keeps on updating the website for SCMP. They keep on adding case studies, so you need to be updated and keep on referring them. And what I would also add to it is RTPs for SCMP, because the questions are a little tricky. So there might be a few questions which you won't be able to attempt in the first go, and you might not be able to crack it in the exam if they come. They haven't yet come, but there is a possibility because they are a little tricky questions. So I would suggest you to add RTP to your material also, bare minimum. तो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि आपने सिर्फ जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आता है एंड उनके RTPs एंड MTPs आती है वही किया एंड कुछ भी सॉल्व नहीं किया। नहीं, नथिंग एल्स, आई स्टक। तो स्टूडेंट्स आप सुन लीजिए कि कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप तो पूर्वा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कितने रिविजन्स किए थे SCMP के लिए एंड आप क्या सजेस्ट करती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी हैं जो बोथ ग्रुप्स दे रहे होंगे एंड कुछ बच्चे हैं जो सिंगल ग्रुप दे रहे होंगे, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं, कैसे कितने रिविजन्स करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए SCMP को। Okay, so our attempt was, as it is an exception, so we did get a lot of time for multiple revisions. But for generally what I consider is 3 revisions before the exams are sufficient. 2 out of which should be a thorough study in terms of complete reading of the study material. And the third one will be the words what you have marked and specific areas what you have to study just before the exams. The third will be concerned only to that specific what you have to study. And including that, the questions, I don't think you will get time yet and again to solve with the entire set of questions. So once or twice you're done with the questions, then you only either go through the marked areas wherein you have made mistakes, or some note you write besides the question ki I need to only go through these points. And similar is going to happen with the case studies, wherein you won't have time to read the entire case study. So in the second or the third revision where you reach, you mark areas in the case study, the problem what they are discussing, you mark that. And then in the solution, yet again the points what you need to remember, you mark that. So paper ke pehle you understand the crux of the problem and the points of solution what they have provided for it. Nice. So my next question is writing practice important? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब SCMP थ्योरी ज़्यादा हो गया है तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उन लोग सोचते हैं कि यार ऊपर से देख लेंगे तो हो जाएगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस आपने की थी क्या, कितने बार की थी और इम्पोर्टेंट है क्या?
Okay, so this is a bit subjective question, but I did give a single test series, and which I think at least one test series is important to understand your weaknesses. If you are able to write the entire question paper, write the entire answer, or you don't know how to format the answers, all of these things are understood once you give your test series. Okay. And for SCMP in specific, if there is a question of different type or a unique, which has a unique format, something such as the LPP question given, Okay. तो उसके लिए you have to practice the format so that you have to write. Till the time you don't understand the flow of the solution, you won't be able to remember and put it on your paper. Okay. So that's bare minimum कि आपको questions at least you should write down which are some, unique in nature, but which are some basic questions. Then in that case you can do one out of many and then move ahead. Okay. But case studies again, my personally I suggest कि आपको case studies पूरा लिख के देखने की जरूरत नहीं है, because it's too long and you don't have enough time. There are other subjects also. एक ही subject पे focus करना doesn't make sense. So what you can do is read the question or the case study, then think of points, think it as a real life issue, and what would you as a person give solutions for it. Let's say you've thought of 5 points, and out of 7 or 8 points you were able to identify 4. So mark those 3 points, which in the next revision you will have to remember, as in these were the points I couldn't guess, or I couldn't get that as a solution. So that's how I studied. Okay. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने थ्योरी के लिए कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि थ्योरी अब 64 मार्क्स की आती है पेपर में, 120 मार्क्स में से 64 मार्क्स थ्योरी आता है, एंड बहुत बच्चे थ्योरी में ही लैग करते हैं. प्रैक्टिकल तो बन जाता है मोस्टली बच्चों को, बट थ्योरी में बहुत लैग करते हैं. तो थ्योरी के लिए कैसे प्रिपेयर किया, एंड एग्जाम्स में कैसे लिखा थ्योरी आपने? See, so what I have understood, SCMP is not a theory subject. Okay. This is what I have understood. It's an analytical subject. Good, correct. Theory is something like law, or audit is also to certain extent theory, but law is complete theory. आपने learn किया, you have to just put it on the papers going in the exam. Okay. Obviously you have to decide what laws to apply and stuff, but SCMP is more of analytical, and analytical in terms of you need to understand the models and then make those models work in a real life situation which they are giving. Okay. So what I understand the crux here is you need to go through the models again and again. एक बार समझ गया तो उसके बाद सिर्फ उसको यूज करना आना चाहिए. More than that, and very specific theory if you want to consider, वो models में जो उनने या तो definition दी हुई है या थोड़ा बहुत जो भी दिया हुआ है, if you mark it in the first or second reading, you can just go through them. There are very small of these definitions. Okay. So which you can go through and write it in your own words in the exam. It is not specific to write the entire same definition. So it's more of understanding and then applying it, rather than just theory wherein you just put it on the paper. Correct. बहुत सारे स्टूडेंट्स वही अभी समझने लगे कि थ्योरी है तो मतलब मगअप करना लिखना है जाके, बट ऐसा नहीं है. यू हैव टू एनालाइज इट. आपको एनालाइज करना पड़ेगा एंड अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ जाके, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आते हैं कि फर्स्ट पार्ट आपका प्रैक्टिकल आएगा एंड सेकंड मार्क्स उसका ही थ्योरी आता है कि आप एनालाइज कीजिए सिचुएशन को या फिर रिकमेंड कीजिए सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन आता है थ्योरी में भी, तो आपको वहाँ पे उस क्वेश्चन पे कौन सा मॉडल क्या चीज़ अप्लाई हो रही है वो बताना पड़ेगा वहाँ पे. तो इट्स मोर ऑफ एनालिटिकल रादर देन थ्योरी. करेक्ट. सो यस, कंप्लीटली. हुआ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस बार मतलब जैसे SCMP एक नया सब्जेक्ट था. जब हमने क्लासेस ली थी, मैंने भी जब क्लास ली थी, तो वो फर्स्ट क्लासेस थी जो आई थी नई न्यू कोर्स के लिए. तो सबने मतलब प्रैक्टिकली पढ़ाया, सबने वैसा ही पढ़ाया जो ओल्ड कोर्स में पढ़ाते थे वैसा. बट आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी अलग से जिसने आपको एग्जामिशन मतलब जिसमें आपको एग्जामिशन लाने में हेल्प की? क्योंकि जैसे बहुत सारे बच्चे इसलिए फेल हुए बस क्योंकि वो जिस अप्रोच से उन्होंने क्लासेस की थी उसी अप्रोच से पढ़ा उन्होंने एंड फेल हो गए वो, क्योंकि एग्जाम में वो स्कोर नहीं कर पाए उसी अप्रोच से. आपने क्या, आपकी स्ट्रेटेजी में डिफरेंस था जिसके कारण आपका इतना अच्छा स्कोर आया? Okay, so let me quickly tell you what exactly happened with me. Initially, when I started studying SCMP, it created a lot of fear in my head because other subjects, at least I had gone through while my classes and everything. But
for SCMP, the classes weren't enough, and I talked to a lot of people, and they told me the classes notes are not, self-sufficient for you to go ahead, and you have to do on your own. So I literally feared it a lot, and every time I gave it a subsequent reading, there were still the same questions precisely which I wasn't able to crack, and it was like कि मेरा वही mistake बार वैसे ही हो रहा है. Okay. So I did talk to my senior regarding this, and he told me that SCMP is a subject wherein you cannot get complete comfort, because you have to understand and relate and then apply, and it is subjective in nature. So there is a sense of subjectivity and you need to accept it. Okay. If you are going to worry कि आपका आंसर प्रिसाइज होना चाहिए एज इट इज जैसा मॉड्यूल में दिया है या पेपर्स में दिया है, that is not possible. Okay. Because yet again, it's a real life situation wherein you have to provide solutions. The solutions can be multiple, whether stated in the answer sheet or not. Okay. And to the extent I understand, they do give marks for a sensible solution if you provide. Okay. So, so some questions which you weren't able to get, you go through them again and again. Don't leave it. If you are facing a problem in a question, after 2-3 days, you again revisit that question and again go through it. Okay. Till the day of the exam, you aren't leaving anything. And I would suggest whatever, if irrespective of the hurdles you are facing in any question or any area, don't leave it and go. Okay. मतलब पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर. Question paper and also the material before the exams. Okay. There will be in study material also, there are certain tricky questions which I think are a little difficult to crack, and even if you do, the next time you open it up again, you aren't able to get through it. So do it again and again so that you actually, before the exams, it is thorough in your head. Just don't leave it and go before the exams. Do it and go. That's what I'm suggesting. Okay. Don't leave anything. Nice. So Purva, my next question is, जैसे इस बार अटेम्प्ट में बहुत बच्चे फेल हुए हैं नवंबर में, तो क्या रीज़न है कि इस बार इतने सारे बच्चे फेल हुए हैं? आपको क्या लगता है क्या रीज़न है? So it's generally, it's like when you are, it takes a lot of time to acquaint to a new concept, and SCMP as a subject has, evolved as a new concept which people haven't really heard of. आप अकाउंट्स देख लो, आप लॉ देख लो, आपको पता है क्या है, कैसा है, हाउ IPCC में भी किया है, but this was a new concept wherein it was a problem solving approach in the entire subject. So that's completely new for students. First is that. Second, classes, sufficient and enough classes aren't available, wherein teachers haven't completely modified themselves to make the students understand. I have heard a lot of teachers still teaching as per the past pattern, as in many practical questions with very few limited brain working case studies. And what I also understand is the CA students as in general have a tendency of ratifying. That includes me also. I'm not denying that fact. But where in case you have to start putting on brains, then in that case, people are a little hesitant. But this subject actually requires a problem solving approach which is subjective in nature, and therefore there's a little hesitance. All we need is a change of perspective towards the subject, nothing else. Okay. So Purva, before leaving, what's your final tip for students जो पेपर देने वाले हैं अभी या फिर आगे पेपर देने वाले हैं, कि उनको SCMP कैसे अप्रोच करना चाहिए एंड क्या करना चाहिए? एक फाइनल टिप आपकी तरफ से क्या रहेगी? Okay, so first thing, what 2 points I would like to add as in how I studied. One was in case of formulas for SCMP which were a little difficult, I put it on various sticky notes. Let's say in somebody's room or in outside the door, kitchen door, wherein I used to visit every day. So each time I used to cross that door, I went through the formula. So it got stuck in my head. And the second thing is for understanding and revising the models, which were a completely new thing for me. I printed Sankalp Kanstiya's sir's these notes. These are short notes, quick notes. Yeah, exactly. Or maybe you can make your own quick diagrammatic notes for the models and keep on going. I used to get up early in the morning and just say if I have to start SCMP today,
I will go through the models today. Tomorrow again when I get up, I'll again go through, because it takes hardly 15-20 minutes to go through, 3-4 chapters models. So that did help me a lot. And concluding, finally what I would like to suggest is practical understanding of the subject is very important. Instead of fearing it because it's something not done before, take interest in it, understand, and the examples used in the study material are very practical and very interesting if you consider it to be a real life problem, and you as a person or you as a consultant, somebody who has to provide a solution. And that makes the subject very interesting. Okay. The subject is entirely about how a prudent person would react. Focus on reducing cost, not just short term and temporary, but long term and real cost reduction. And in any question, whether asked or not, always consider non-financial factors for decision making and for giving any suggestions. थैंक यू सो मच पूर्वा, आपने बहुत अच्छे से समझाया बच्चों की कैसे पढ़ना है. तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे सिर्फ यही कहना है कि इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है उस पर रिलाई कीजिए, उसको बार बार सॉल्व कीजिए, एनालिटिकल अप्रोच से जाइए. जस्ट चीज़ों को रटना नहीं, अपने को एनालाइज करना है, समझना है एंड कंसेप्चुअली जाना है. क्योंकि पेपर में अगर नया क्वेश्चन भी आता है जाके, तो आपको अगर कंसेप्ट अप्लाई करते नहीं आता है ना, तो आप नहीं पास हो सकते. आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए पेपर में, जो आपने पढ़ा है इतने टाइम से. तो बस मैं इस पॉइंट के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ वीडियो. थैंक यू सो मच पूर्वा फॉर गिविंग अस टाइम, फॉर helping the students for this video for SCMP. Thank you so much. Thanks. I'm glad I could help Thank you. So students, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए. क्या दिक्कत आ रही है, कुछ भी और दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको इस सब्जेक्ट में दिक्कत जा रही है. थैंक यू सो मच.